Hello, good evening everyone. Is it audible? Is everything fair? So, good evening, good evening. Fair. Okay, just give me 1 minute. Let me share the link. Good evening everyone. Fair. So we will continue from the previous lecture itself. I would like to tell you, if you haven't attended the RL-9, the lecture 9, you must go through that because this lecture is just in continuation of that. Fair. So what I would like to do here is uh, initial 15 to 20 minutes I would like to give you a picture कि whatever test actually basically we are dealing with the infinite series. So yesterday and that in the previous lecture we tried to decode the things theoretically and things were pretty easier, only it was up to us how we took that, right? So definition focused we yesterday. If you talk about series, a series is nothing but a spatial sequence, right? So yesterday I told you whenever you are dealing with the series, sometimes when they ask you a question in your CSE or forest services, sometimes they add one word, कि whatever result you are using, prove that, give that proof. So for that I put the best efforts yesterday's lecture कि आपको ये समझ आए कि बेसिकली ये proofs जो है the proofs are not tough. Fair? चल. So we will continue from here itself from the previous lecture. Fair? चल. So yesterday we have seen one block. Today is the final block of infinite series, and we were interested in सबसे पहले तो हमारे पास क्या थी? We had positive terms series, right? We had seen we will write this series in the form of n going from 1 to infinity uh, like this un, and that is nothing but u1 plus u2 plus un. Infinite number of terms are there. So this is the positive term series, means u1, u2, un all are positive. Fair. Yesterday I told you, ध्यान से देखेंगे, the convergence of the series summation un is basically implying the sequence Sn is convergent. So I hope yesterday you were clear about the things कि
what is sequence of partial sums. So यहाँ Sn को क्या बोलते हैं, where Sn is nothing but partial sums of initial n terms of that series. So basically it means कि summation n going from 1 to infinity un is some finite value s. क्या है? Some finite value means whatever the series you have in सारे को, if we perform the addition we get a finite number, then it means कि this series is convergent. Fair? And indirectly what it says, this implies the sequence का limit Sn is S. Fair? Or for every given epsilon greater than 0, there exists some m greater than 0, that means positive integer, such that modulus of Sn minus S is less than epsilon for n greater or equal to m. Why I have written these terms again? Because I wanted to make you feel, dear fellows, that this is not something extraplanetary. Easy things, but it depends on you how much you practice for that, how much you try to practice for writing the mathematical language. Fair? तो सीरीज के कन्वर्जेंट कहने का मतलब उसका समेशन कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा है, एक सीरीज स्पेशल सीक्वेंस होती है जिसको सीक्वेंसेस ऑफ पार्शियल सम्स बोला जाता है. सीरीज के कन्वर्जेंट कहने का मतलब इस सीक्वेंस का कन्वर्जेंट, और सीक्वेंस का कन्वर्जेंट हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन इट लुक्स लाइक दिस. फेयर? So why I have started from here, because now we are gonna learn what is the target today. Target is different tests to check convergence. ठीक? किसका? Of summation n going from 1 to infinity un. Fair, dear fellows? So if you talk about how to check the convergence, for that we have some tests. What I am gonna do now for you is I am gonna discuss, देखिए, be on the board please everyone, comparison test. Be on the board please everyone. I will be putting my best efforts to make you feel कि कंपैरिजन टेस्ट को रटना जितना आसान है उससे ज्यादा आसान है उसको समझना. So if you are really learning with this lecture series, I would like to suggest you devote next 5 minutes over the board itself. ठीक? चलिए देखिए कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है. Let if un is less or equal to some k into vn for some finite m as n greater or equal to m. Dear fellows, if you have learned the yesterday's lecture curiously, you will, like, not only the previous lecture, the sequences as well. What I tried to convey, a sequence का nature or a series का nature is unaltered if you remove or add some finite number of terms. You getting my point? Finite. So what does it say? Comparison test कि un is less or equal to kvn for n greater or equal to m. For example, ध्यान से देखना. Be on the board please.
let if summation un is u1 plus u2 plus un and so on. Summation bn is v1 plus v2 plus v3 plus vn and so on. ध्यान से देखना, what does this imply? Let, like, maybe u1 is greater or equal to greater than v1, ठीक है, u2 greater than v2, but un is less or equal to some k times vn for n greater than 2. I guess आप लोग को मजा आ गया होगा पूरा. क्या बोला? हो सकता है there are some finite number of terms for which this relation does not hold, but after those finite number of terms, so here m का value is 2, means after 2 terms this relation holds well. क्या बोलेंगे? That is after 2 terms in the series, the relation un less or equal to k times vn holds well. इतनी बात क्लियर है? So comparison means what? Be on the board please everyone. अभी what we are gonna do now, suppose that dear fellows, ध्यान से देखना, if you have some information about vn here, क्या हो सकता है? So मैं मान लो इसको नंबर डाल देता हूं 1, इस पूरे को ही 1 डाल देता हूं. देखिए ध्यान से, केस 1, let if summation bn and going from 1 to infinity, that is hidden here, सीरीज में इस टर्म से भी लिखे थे, is convergent, then summation un is also convergent. That is the first result we have, and that is the comparison test. Means if we compare two series un and bn, which behaving like un is less or equal to k times vn, where k is non-zero constant, obviously, where k is non-zero constant, then if the bigger series is convergent, then the lower wala series will also be convergent. That is the comparison test. Fair? अब देखिए, why I was taking so much interest here. मेरा समझ है? Because you people remember this result from undergrad itself. I know it well. Fair? But when I ask you to prove this, you will fail to deliver, even you will fail to imagine. You getting my point, everyone? Let's start now. Be on the board, please. थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा. Just wait a minute. Just wait a minute. चलिए देखिए ध्यान से, if I want to prove it now, क्या? What you have taken? Let if summation bn is convergent. Since summation bn is convergent, right or not? This implies, क्या imply करेगा? Limit n tends to infinity, Sn is S, where Sn का meaning is b1 plus b2 plus
Vn. Say yes or no. किसी को दिक्कत? This implies modulus of Sn minus S is less than epsilon for n greater or equal to m. Say yes or no. This implies Sn lying between S plus epsilon से S minus epsilon से S plus epsilon for n greater or equal to m. इतनी बात क्लियर है या नहीं? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, now we want to know कि whether this is convergent or not. देखिए ध्यान से, since Sn is u1 plus u2 plus un, right or not? अब ध्यान से देखना, Sn is lying between this, तो अब मान लो इसको मैं Tn मान लूं, क्या ही फर्क पड़ता है? इसको मान लिया, I have taken the Tn part. Since, ध्यान से देखिएगा, since un is less or equal to kbn for n greater or equal to m. Yes or no? So Tn cannot exceed y s minus epsilon से s plus epsilon. Check it out. क्योंकि Vn के लिए Sn किसके बीच में है? s minus epsilon से s plus epsilon. Whereas un is less or equal to kbn, so un का summation will also be lying in this interval. हो सकता है इससे अंदर ही आ जाए, लेकिन इसके बाहर नहीं जा सकता. Say yes or no. Please say yes or no. Maybe ये जो Tn है, Tn plus h हो जाए, that is different scenario. So this implies summation n going from 1 to infinity, un is also convergent. एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है या नहीं? तो बताइए. Tn is less or equal to Sn, so यहां पर Tn plus h you can write, not an issue at all. ठीक है, what you can write here? Tn plus some h, ये इसके बीच में लाई करेगा, सो इसको एक लाइन और लिख सकते हैं यहां पर. जस्ट वेट अ मिनट प्लीज. This implies Tn lying between, मैं लिख दूं इसको s minus epsilon plus minus h को कुछ और लिख दूं, s dash minus epsilon से s dash plus epsilon for n greater or equal to m. Is it visible or not? This implies summation un is convergent. क्या लेकर चले थे? Since what we have shown. So dear fellows, कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ करने में कितना दुख आया है, आप लोग ईमानदारी से मुझे बता दीजिए, एकदम ईमानदारी के साथ. If we are comfortable with the definitions, then what is in the proof? Nothing, my dear fellow. Just exactly explanations reach there. आराम से देखिए, इनफाइनाइट सीरीज के अंदर मुझे नहीं लगता है कि आप में से एक भी लोग ने आज तक प्रूफ करने की कोशिश की होगी, जितना मेरा अपना अनुभव कहता है टीचिंग का. आज मैंने आपको सिर्फ ये जताने की कोशिश की कि भाई प्रूफ टफ नहीं है, लेकिन पढ़ना होगा सिस्टमैटिकली, पढ़ना होगा सिस्टमैटिकली. डिसीजन इज योर्स. कुछ विजिबल नहीं होगा तो बोलेंगे I'll change the setting. Is everything visible?
हाँ ठीक है, दिख तो रहा है। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। शुभम चौबे, सुंदरम, कनिष्क जोशी, प्लीज रिप्लाई। प्रूफ्स आर टफ। कंपैरिजन टेस्ट का पहले प्रूफ किया था क्या? चलो, shall I proceed now? ठीक है dear fellows. Okay, be on the board please. And what I would like to suggest you, UPSC का demand is sometimes they ask कि whatever result or theorem you are using in infinite series का convergence testing, prove that, give it a proof. तो proof कुछ भी ऐसा टफ बात नहीं है। अभी देखिए, अब इसका केस 1 क्या हो गया? Let if summation bn is convergent, then summation un is also convergent. We have seen that. Now we would like to make it more interesting. देखेंगे इनिशियल 1 और 2 टेस्ट आई विल डू फॉर यू विद द प्रॉपर क्लैरिफिकेशन. आफ्टर दैट यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि यार बहुत आसान है. द सेम बुक यू विल फॉलो ना, यू विल सी एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर. चलिए देखिए, दूसरे वाले का बाजा बजाते हैं. केस 1 वाज व्हाट? हम कंपैरिजन टेस्ट को, दिस इज इक्वेशन 1 होल्ड्स. ओके, केस 2, लेट इफ 1 होल्ड्स. 1 मींस वो जो इक्वेशन लिखा है वो, एंड if summation un is divergent. क्या बोल दिया? if summation un is divergent, then we have to show summation vn will also be divergent. Will also be divergent. Fair? अब इसको अगर प्रूफ करना हो तो देखिए कितना आसान है. Let if summation n going from 1 to infinity is divergent, this implies limit n tends to infinity, Sn does not exist finitely. Say yes or no. So Sn un का हमने tl लिया हुआ है, right or not? This implies tn does not lie, tn does not lie between some s dash minus epsilon and s dash plus epsilon. This implies Tn plus h does not lie between this. अब Tn plus h is less than Sn. So if bigger number is not inside this interval, then a smaller number cannot lie between that as well.
से यस और नो. सो इसको लिख दीजिए कैन नॉट. द प्रूफ इज डन. इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? दिस implies summation vn is divergent. क्या लेकर चले थे? क्या प्रूफ कर दिया कनिष्क जोशी? फन. डेफिनेशंस का यही मजा है. नोट डाउन प्लीज. ओके अमित जी. अभी पूरे प्रूफ को एक बार देख लीजिए एक लाइन में सब लोग. देखिए क्रिस्टल क्लियर चमका कि नहीं. एकदम बच्चा लोग की तरह. Is that noted, everyone? Okay, yes. देखिए, write a heading please. Write the heading. Another form of comparison test. इसको लिमिट फॉर्म भी बोला जाता है. Do you know what please? Just see it once, then adopt it. है ना? देखिए, what it says. If limit n tends to infinity, un plus vn equals to L, where L is some finite non-zero. अभी देखना. चलिए मैं पूछ. कनिष्क जोशी, शिबू जायसवाल, अमित, why you take like this? मतलब why you take like this? नॉन जीरो फाइनाइट ही क्यों? याद तो होगा, सबने ही किया है कॉलेज में भी. देन समेशन n going from 1 to infinity un
and summation Vn both have same nature. मीन्स अगर un कन्वर्जेंट है तो bn भी कन्वर्जेंट, अगर un डाइवर्जेंट तो bn भी डाइवर्जेंट। चलिए देखिए इसका मजा लेते हैं पूरा। View on the board please. Let if limit n tends to infinity un over vn, un upon vn is l. We are so maths lovers like कि अपने को पता है बेटा un इस लिमिट लिखने का मतलब क्या है, ठीक है। This implies un upon vn lying between, या एक लाइन और लिख देते हैं, सॉरी, माइनस l लेस देन एप्सिलॉन for n equals to n greater or equal to m. This implies un upon vn lying between l minus epsilon say l plus epsilon for n greater or equal to m. This implies un lying between, ध्यान से देखना, l plus epsilon into vn. This is L minus epsilon into Vn. Since epsilon is a small quantity closer to 0, now if L is also 0, this result will nowhere lead us. But, ध्यान से देखना, since L is non-zero, so, देखिए number first, if we take un less than l plus epsilon into vn, previous test will prove the required target. Second, if we take un greater than l minus epsilon into vn, again the same thing will come into picture. You can imagine this as some k. बोलो हाँ या ना। अमित कुमार, आज समझ में आया l को नॉन जीरो क्यों लिया जाता है? एकदम विश्वास के साथ कहिए, ठीक है। लिख लीजिए और अंडरलाइन, एकदम ईमानदारी के साथ। So such learnings are always helpful. Now it is up to you, dear fellows, how you revise those things, because I am trying my best from the day one itself. Okay, dears, everyone, is that noted?
So you have to remember this as an exam point. Write down please. पीछे वाले में केस 1 एंड केस 2 को एग्जाम पॉइंट लिख लीजिए. The previous one, case 1 and case 2, write those as exam points. So, write the heading please. Comparison test type 2. अब हम फटाफट लिखते जाएंगे because we have developed our basic understanding about that. Either it is proof or not proof, है ना? अभी we have proper understanding, right? So just to save our time, लिखेगा इसका statement या exam point. What does it say? If summation un and summation vn are two positive term series and there exists a positive integer m such that un upon un plus 1 greater or equal to vn upon vn plus 1 for all n greater or equal to m. Then number first, summation un is convergent if summation vn is convergent. Number second, summation vn is divergent if summation un is divergent. So abhi whatever the understanding we carry, what I feel for you is when I say there exists some positive integer like this, तो इसका मतलब क्या है? Can anyone think like this? There may be some term, some finite number of terms up to which this relation does not hold, but after those finite number of terms, this relation holds for all terms of the series. Are you getting my point? So what does it imply? एकदम बच्चा लोग की तरह. This relation holds for all but finitely many terms of series. Right or not? समझदारी बहुत जरूरी है. रेक्टिफिकेशन तो आप कॉलेज लाइफ से करते ही आ रहे हैं, राइट? So then this thing holds well. बाकी अगर उसका प्रूफ लिखना होगा तो फटाफट लिख सकते हैं. अभी तक तो हमारी डेवलप उस पे like understanding develop हो चुकी है, right? So let me write that fast. So what we have, so let Sn equals u1 plus u2 plus un. The other I have taken as Tn equals v1 plus v2 plus vn. Fair? So for n greater or equal to m, we can write for this by the given relation as um upon un as um upon um plus 1 um plus 1 upon um plus 2 um plus 2 upon u. Just the management of the terms, nothing more than that.
un minus 1 upon un. These whole relations holds for greater or equal to. So this relation gives me Vm upon Vm plus 1, Vm plus 1 upon Vm plus 2, Vm minus 1 upon Vm, right? So इधर में चल रहा है um upon um, right? So um को अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ, so this implies un is less or equal to um upon vn into vn. This dictates all the story. देखिए कितना मजेदार है चीजें यहाँ पर, केवल सीखा नहीं सही से। देखिए ध्यान से, लिमिट फॉर्म में आई यूज द केस 1 टाइप 1, हियर टाइप 2 को whatever the given relation I have, I want to reach to this thing, right? This implies un is less or equal to, because this is some fixed value, right? um upon vm, that is some fixed term na, mth term upon mth term. So this is some k value for n greater or equal to m. This reduces to type 1. Say yes or no. Say yes or no. शुभम चौबे, कनिष्क जोशी, शिबू, तो प्रूफ टफ है ना यहाँ पर? डेफिनेशंस नहीं पढ़ते इसलिए टफ लगेंगे, आज के बाद कभी टफ लग नहीं सकते, आई कैन गारंटी। हाँ, ये मेरे को सपने में नहीं चमका। Once I have practiced this twice or thrice, then this is set into my mind कि okay, for this particular I will initiate like this. That is the reality. I accept that. So how to start? For that you can mark star here. Means it needs twice practice. ओके डियर्स, आराम से लिखिए, कोई तनाव नहीं लेना है। Is that noted?
Fair. So what is the pattern? What is the way to study this particular topic? We will see some test, then analyzing the proof of that test, then few examples. And this will be reflected for every test. Fair? So let's have few examples here. लिखिएगा example 1. Check the convergence or so that the series 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1 upon factorial 3 plus 1 upon factorial 4 is convergent. So now I would like to work for those students who are doing this topic very first time. For them I would like to speak like a child. देखिए dear fellows, whenever you have some series, you will observe the series. So let's say the given series you will write like this. So if you write the given series like this, this turns out to be 1 upon n factorial. Check it out. 1 plus 1 upon factorial 2 plus 1 upon. So this can be summarized as this. So we have a series like this here. Fair? Yesterday when I was like doing the proofs and all, the comparison series, summation 1 upon n power p, right? There I told you कि factorials के केस में we have a very wonderful result. So देखिएगा ध्यान से. Whenever you have factorials, now onwards you will develop this habit. Suppose that if I take 1 upon factorial 2, here I take, ध्यान से देखिएगा, less or equal to 1 upon 2. If I take 1 upon factorial 3, it can be written as 1 upon factorial 2 ka square, because 1 upon 6 is less or equal to 1 upon 4. Similarly, if you talk about 1 upon 4 less or equal to 1 upon 2 ka cube, because here it is 24, 1 upon 24, here it is 1 upon 8. ध्यान से देखते रहना. So what you can observe, यहाँ पे देखिए, what is your observation? UN, ध्यान से देखना, UN that is 1 upon factorial n. This is less or equal to 1 upon 2 ka power n, and this series you can take like some series new Vn. आराम से देखिए सब लोग, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइए. That is, we have UN is less or equal to some k into Vn type for n greater or equal to m type. Fair? अब m का वैल्यू यहां तो 1 ऑनवर्ड ही आपको मिल जाएगा. 1 equals 1. Fair? This implies if summation Bn is convergent, then summation Un will also be convergent. So let's check the convergence of summation Vn now. Vn क्या है? Summation Vn, that is 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 ka square plus 1 upon 2 ka cube and so on. This is a geometric series whose summation will be, common ratio is less than 1. So this is turned out to be 2. So summation n going from 1 to infinity is a finite number. So what you will say? This implies summation n going from 1 to infinity is convergent. So summation n going from 1 to infinity Un, that is also convergent.
कंपैरिजन टेस्ट का मजा आया कि नहीं? करते तो हम लोग पहले से भी हैं, लेकिन मैंने उनके लिए बोल दिया जो फर्स्ट टाइमर्स है ना? प्लीज नोट डाउन। फैक्टोरियल और टू वाला रिलेशन अब आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अब आपको ये नहीं लगेगा कि ये कहां से आ गया, अब तो याद हो जाएगा ऐसे कि जब भी फैक्टोरियल रहेगा वी कैन कंपेयर दैट लाइक दिस। नोट डाउन प्लीज। Is that noted? So let's take an example 2 now. लिखेंगे check the convergence of the series 1 upon 3 square into 2 upon 4 square, ठीक है, प्लस 3 into 4 upon 5 square into 6 square plus 5 into 6 upon, ठीक है, this is the given series for us. देखिए ध्यान से, persons who are doing this chapter first time, for them now I am trying to be a teacher, ठीक, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए तो काम हो चुका है, ठीक। देखिए ध्यान से, how to answer such questions. Whatever the series is given to you, try to write in the form summation n going from 1 to infinity. फिर तो मुझे un चमक जाएगा. So if you observe this series from here, that is un, what you can write here, the nth term un for 1 2 3 1 3 5, that is the odd numbers. So odd numbers के लिए अपन write 1 से है तो 2n minus 1, 2 4 6 obviously 2n लिखा है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो 2n minus 1 का स्क्वायर लिखा है, 3 ले रहा है 1 नहीं ले रहा है तो 2n plus 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ 4 ले रहा है 6 ले रहा है, so for that you can write 2n, तो 2n plus 2. Check it out please everyone. If
you have any doubt, please raise your voice. So that is the crucial step here. By observation, writing the un. So this series is nothing, the given series is nothing, but it is of the form n going from 1 to infinity, 2n minus 1 into 2n upon 2n plus 1 का whole square. So persons who are doing these chapters first time, they may feel कि सर मेरे को इतनी जल्दी क्यों नहीं चमका. So it will come on practice, my dear fellows. एक एक करके ऑब्जर्व कीजिए. Here it is 1. So if I am starting my counting from 1, so here it is 3, here it is 5. So obviously numbers यहाँ तो 1 2 3 चल रहे हैं, but I need 1 3 5 type. So obviously I need 2n type. पहली चीज. Now first term 1 चाहिए. Here it is 1. So 2n will give 2. That means I have to subtract by minus 1 to get this number. So things will be automatically settled. 2 4 6. 2n type क्योंकि n 1 से infinity जा रहा है. Similarly 3 5 7. So I don't need 1, but here I am starting n from 1. So 2n से 2 into 1 2 मिलेगा, but मेरे को 3 चाहिए तो plus 1 करके जनरलाइज करना. तो एकदम बच्चा बन जाइए जब भी चीजें समझ में ना आए तो. ठीक. चलिए, फेयर डियर फेलोस, अब देखिए ध्यान से हाउ थिंग्स विल वर्क. व्यू ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. देखिए ध्यान से. इफ यू ऑब्जर्व हियर द न्यूमरेटर इज n स्क्वायर, है ना, डिनोमिनेटर इज n पावर 5 type. That means the series is 1 upon n square type. This will indicate, take Vn as summation n going from 1 to infinity. कोई दिक्कत किसी को भी? This itself is indicating, क्यों? क्योंकि if you observe here, since limit n tends to infinity, un upon vn, what will be now? 2n minus 1 into 2n upon 2n plus 1 का whole square into 2n plus 2 का whole square. Divided by bn का वैल्यू इज 1 upon n square. Now check the limit. This limit, अभी आप देखिए अपने को 1 upon n square जो है, एक n square जो यहाँ वाला n square है वो तो कैंसिल हो जाएगा. बाकी आपको यहाँ पे जो नंबर मिल रहा होगा that will be a finite non-zero number. So summation un and summation vn will have same nature. Means if you observe summation bn, अब bn क्यों ऐसा लिया है? देखिए, we know that summation 1 upon n का power p is convergent for p greater than 1. So summation bn is convergent. This implies summation un is also convergent. Summation un क्या है? The given series. So persons who are doing it first time, for them I have decoded the steps. I hope those will be helpful for you. 2 to the 4, 4 नीचे आएगा, 2 to the 4 ये है, 16 हो जाएगा, 1/4 आ रहा होगा. चेक इट प्लीज. यहाँ से n कॉमन लो तो n स्क्वायर, एक n स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, बाकी नीचे वाला n स्क्वायर. नीचे से 2 कॉमन लोगे तो 4 बाहर आएगा, इसका 4 4 4 जा 16, ऊपर वाला 4, so 1/4.
check it out, or 1 upon infinity will become 0. These things we have already done, बच्चा वाला indeterminate form, calculus, differential calculus. नोट कर लीजिए आराम से. Okay, Arya. Everyone, is that noted? Okay, yes. So I hope comparison test, comparison series, wala things are clear to you all, right? How to write UN, how to take VN, right? Rest will depend on your practice. Simply I would like to suggest you मलिक अरोरा का जो बुक है उसके एग्जाम्पल्स कर लीजिए, मोर देन एनफ. क्योंकि अभी मेरे को टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ रियल एनालिसिस का बुकलेट तैयार करने का, तो इसीलिए चैप्टर वाइज में बता जा रहा हूँ. फॉर रियल सीक्वेंसेस एंड सीरीज मलिक अरोरा का केवल इन्हीं चैप्टर का पीडीएफ आई विल सेंड टू यू, नॉट एन इशू. मुझे लग रहा है मैं अभी भेज ही देता हूँ आपको. जस्ट वेट अ मिनट. अभी हम आगे भी टेस्ट करा रहे हैं, पहले मैं पीडीएफ भेज दूँ आपको. दोनों इनफाइनाइट सीरीज वाला है. जस्ट वेट अ मिनट. दोनों ही है, मैं दोनों भेज देता हूँ. कनिष्क, व्हाट यू आर सेइंग? अभी हम करेंगे और चीज थोड़ा सा, बस इसको मैं भेज दूँ एक बार. फॉर द टाइम बीइंग भेज रहा हूँ, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं बुकलेट तैयार करा दूंगा. एंड लाइक डोंट थिंक कि वी कैन कंप्रोमाइज हियर. इवन मैं भी अगर असाइनमेंट तैयार करूंगा तो मलिक अरोरा के ही एग्जांपल उठाऊंगा. बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न आप उठाइए, सीधे सीधे एग्जांपल वही पूछता है. लेकिन अब आपको खुद से स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा कि आप पूरा का पूरा मलिक अरोरा में खो गए हैं. सेलेक्टेड चैप्टर्स और सेलेक्टेड चीजें करनी है. मैं इसलिए आपको यहाँ पे लेक्चर्स में बोल देता हूं कि क्या क्या आपको करना है. ठीक है. जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे. देखिए टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है. केवल 2 ही पेजेस वो मतलब चैप्टर्स किए हैं मैंने जो हमें चाहिए.
So we are developing here methods or different tests to check the convergence of an infinite series, right? First test is the comparison test we have done. Now we will go for another test which is maybe the cauchy and a fruit test. अरे मोर देन एनफ है यार कनिष्क, कोई टेंशन नहीं लेना, दैट इज मोर देन एनफ. कोई भी हो, मतलब मैं उसको देखा ना, बिकॉज एनालिसिस के अंदर आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क. इवन आई वेंट विद एनपी वाली मापा, मलिक अरोड़ा तो बहुत पहले बच्चा लोग में पढ़ा था, बार्टल, बार्टल एंड सैडवर्ड. फिर वी वेंट फॉर रूडिन एज वेल. रूडिन इज द हाईएस्ट लेवल, ठीक. लेकिन वो सब रिसर्च की चीजें हैं, आपके पर्पस का कुछ भी नहीं है. आपकी यूपीएससी का डिमांड मापा, एनपी वाली या मलिक अरोड़ा में से कोई एक उठा लीजिए, उसके एग्जांपल्स लगा जाइए बस. वैसे तो मैंने अभी तक पूरे बैच के अंदर कभी भी लेक्चर्स में आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं की. यहाँ रियल एनालिसिस की असाइनमेंट और बुकलेट अभी तैयार नहीं हो पाया है, टाइप नहीं हो पाया, इसलिए मैं केवल इस सेगमेंट के लिए 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका पीडीएफ वो चैप्टर वाइज ही आपको भेज रहा हूं. जैसे ही ये टाइप हो जाएगा वैसे ही वो बुकलेट वहां पर वेबसाइट में अपलोड करा देंगे, ठीक है. सो अभी देखिए, what you need to do is when you will go through the chapter 4 infinite series which I have shared just now. तो इनफाइनाइट सीरीज के अंदर अब आप अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने कंपैरिजन टेस्ट का फ्लो लिया है, द फ्लो व्हिच वी हैव टेकन हियर फॉर कंपैरिजन टेस्ट, द सेम फ्लो विल गो फॉर कॉचीज nth रूट टेस्ट एज वेल. मींस व्हाट इज कॉचीज nth रूट टेस्ट? Proof of that, the same pattern which I told you, you can go through that. Then the next D'Alembert's ratio test, Ravi's test, logarithmic test, integral test. So what I suggest you guys for the time being with this PDF का help से or whatever book you have, please, no matter you have studied or not, go through that booklet, go through those tests, solve the examples, understand the statement and proof. ठीक है. Next we will meet on Monday. So when we will meet on Monday, you people are supposed to do this exercise by yourself. On Monday I will go very quickly कि कॉचीज रूट टेस्ट क्या है, उसके एग्जांपल एक दो ऐसे करके मैं पूरे इनफाइनाइट सीरीज को समराइज कर दूंगा. But that will happen only when you will be coming with your homework done. Fair? So it's enough from my side for the day. We'll meet on Monday now. कल आपका ऑफ है, इसलिए वो जो काम आपको दिया है सारे टेस्ट को इसी क्लास नोट्स के ऊपर आप नोट कर लीजिए. अगर आपको लगता है कि नहीं सर आपको ही पढ़ाना है तो फिर मंडे को मैं वो सारे टेस्ट वापस से एक बार जल्दी जल्दी करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. सो फिर मतलब मैं क्लासेस लेने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जितना मेरे से मैक्सिमम हो पा रहा है. कोई भी दिल पे नहीं लेगा कि पहले सर 2.5 घंटे पढ़ाते थे अब जल्दी छोड़ देते हैं, ठीक है. अभी कुछ काम है, जल्दी ही चीजें सेटल हो जाएगी. वेदांत सिंह, राम राम. ओके, इट्स योर फर्स्ट लेक्चर. आर्या एक्स. आर्या, गूगल ड्राइव का लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो वेबसाइट पे सारी चीजें अपलोड तो हो चुकी है ना. mindsetmakers.in, इस पर जाएंगे, वेबसाइट में डाउनलोड सेगमेंट में जाइए. डाउनलोड सेगमेंट में यूपीएससी वाले सेगमेंट में सारे के सारे आपको मिल जाएंगे. ओके डियर, so let's summarize the class here. We'll meet on Monday. Good luck from my side. Good night. अभी कुछ दिन और छोटे छोटे क्लासेस करके आगे बढ़ाते हैं चीजों को. ओके डियर्स, बाय, गुड नाइट. टेस्ट वाला एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए, वो आपका होमवर्क है. बाकी I will deal the things in the on the this Monday, coming Monday.
Okay, dears. Okay, good luck. Thanks for cooperating. Okay, Shubham. Good night. Good night, everyone. Okay, Shubham. Happy New Year, advance.